Hello everyone, welcome in 7th standard. And my dear students, you know very well about it. On that day, we had started a new lesson that name is a grain as big as a hen's. And you know very well about that what happened in our previous video, or what kind of situation occurred in our previous video. At that place, or in that magistrate or king court, there was one person. It was an old peasant, and that times he replied, no, I never see as a like or such like a grains. After that he called his father, that old peasant father. That times he also reply, I never see such like a grain. But at that times he said that, so that times he said, maybe or might be my father will know about this grain, है ना. मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या हुआ है. सबसे पहले एक ओल्ड पीजन आया था, है ना, एक पर्सन ओल्ड पर्सन आया था, ओके, जिसे उस ग्रेन के बारे में कुछ पता नहीं था. आफ्टर दैट इस ओल्ड पर्सन के पप्पा आए थे, पिताजी. इस ओल्ड पर्सन के पिताजी आए थे, उन्हें भी पता नहीं था. तो सेकंड वाले पर्सन ने क्या कहा कि शायद इस ग्रेन के बारे में मेरे पिताजी को पता होगा. मतलब किसके, मतलब इसके नाना को, या सॉरी दादा को, मतलब इसके दादा को. ठीक है. नाउ थर्ड पर्सन, अभी थर्ड पर्सन आए थे. अभी थर्ड पर्सन जब वहाँ पे आए थे तो वो कैसे आए, हाउ ही जस्ट एंटर इन दैट कोर्ट. अभी वो कैसे आए वो यहाँ पे पता चलेगा. रिमेंबर, सबसे पहले when that old person enter at that side, so that times he just used two crutches. दो बैसाखी के सहारे आया था. And what about second person? When that second person enter at that place, so that times he just use one crutch or one crutches. Okay, just like वो एक बैसाखी के सहारे आया था. But what about third person? उसके दादाजी कैसे आए थे, विदाउट क्रचेस, है ना. उन्हें किसी भी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ी. उन्हें किसी भी तरीके से बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ी. ही वॉज टॉल, ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही कैन हियर वेरी प्रॉपरली, his eyes were also good. It means that he was totally full, just like in a strong mentality and in a strong body. सब कुछ वो स्ट्रांग में थे. ठीक है. देन अभी उसके आगे क्या हुआ. सो द किंग सेंट फॉर द ओल्ड मैन्स ग्रेन्स एंड द ओल्ड ग्रैंडफादर लुक एट, वेयर इज इट, यू कैन सी हेयर. So the king sent for this old man's father, and they found him too and brought him before the king. He entered walkingly easily, वो अच्छे से चल कर आया, and without crutches के साथ. Then eyes were clear, his hearing good, and he spoke distinctly. मतलब बिना कुछ अटके हुए, बिना डिफ़िकल्टी के सहारे वो बात कर रहा था. The king showed him the grain, and the old grandfather look at it and turn it about in his hand. When he just looked that grain, so that times he was looking at that grain. It is a long since I saw such a fine grain, said he, and he bite a piece of the taste it. तो उन्होंने कहा कि ये बहुत समय पहले मैंने देखा था, और उसका एक छोटा सा पीस उसने लिया और उसको क्या किया, थोड़ा सा टेस्ट किया उसको. देन इट्स द वेरी सेम काइंड, ही एडेड. उसने कहा कि हाँ ऐसा ही था, यही है, इस टाइप से. टेल मी ग्रैंडफादर, सेड द किंग. अभी किंग ने क्या कहा कि टेल मी ग्रैंडफादर, ओके, वेन एंड वेयर वॉज सच कॉर्न ग्रोन. इस तरीके के जो ग्रेन थे वो कहाँ पाए जाते थे और कहाँ बोए जाते थे. देन हैव यू एवर बॉट एनी लाइक इट और सॉ एनी इन योर फील्ड. कभी आपने इसे खरीदा है, या फिर इस तरीके के ग्रेन तुमने कभी, या फिर आपने कभी खेत में बोया है. देन एंड द ओल्ड मैन रिप्लाई. अभी इसके बाद, राजा का सवाल सुनने के बाद, ओल्ड मैन रिप्लाई, एंड द ओल्ड मैन रिप्लाई, कॉर्न लाइक दिस यूज्ड टू ग्रो एवरीवेयर इन माई टाइम.
I live on corn like this in my young days and fed others on it. It was grain like this that we used to sow and reap and thresh. Okay, it means that he just described at the times. He just described at the times, yeah, I just saw such like a grains when I was young. Who said this sentence? This sentence said that old man to king. Old man to king. He said that when I was young at that time, so that times I saw such like grains as well as I sow in my field also. Now, and the king asked again, tell me, grandfather, did you buy it anywhere or did you grow it all yourself? Again, there was second question. What was that second question? That second question was, tell me, grandfather, did you buy it anywhere? ये कहाँ से तुमने खरीदा था क्या? Okay, so that times again that old man reply on that question. The old man smiled. In my time, he answered, no one ever thought of such a sin as buying or selling bread. And we know nothing of money. Each man had enough corn of his own. तो उन्होंने कहा कि एट द टाइम्स उस वक्त तो पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए, है ना. अभी देखो ध्यान से सुनो, पैसे ही नहीं थे मतलब इनके पास पैसे नहीं थे क्या? नो. दैट टाइम्स मीन्स एट द टाइम्स मनी वॉजंट एग्जिस्ट. उस वक्त पैसे थे ही नहीं, आए ही नहीं थे, पैसों का मीनिंग ही पता नहीं था उनको. सो हाउ दे सर्वाइव देयर लाइफ? वॉट एवर दे वॉन्ट दे जस्ट सिंपली एक्सचेंज देयर थिंग्स. जो कुछ भी उन्हें चाहिए था, जो कुछ भी उन्हें लगता था, वो उनके थिंग्स क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे, है ना. उनके थिंग्स एक्सचेंज करते थे और सबके पास एक पर्टिकुलर पोर्शन में या फिर इनफ थिंग्स में जो कुछ भी उनको रिक्वायरमेंट थी वो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल था, वो ऑलरेडी उनके पास अवेलेबल था, ऐसा उन्होंने कहा. देन टेल मी ग्रैंडफादर. अब ये थर्ड क्वेश्चन, रिमेंबर here is third question going on. What is that third question? That third question is, then tell me, grandfather, asked the king, where was your field? Where did you grow corn like this? So there was third question. What was that question? Tell me, grandfather, where was your field? आपका खेत कहाँ था, है ना. और इस तरीके के जो कुछ भी ग्रेन्स है आपने कहाँ बोए. Then and the grandfather answered, my field was God's earth. Wherever I pluck, there was my field. Land was free. It was a thing no man called his own. देखो how that answer was beautiful. Look at here. He just replied on his question. My field was of God's earth. देखो उसने क्या कहा, मेरी जो खेती है, जो कुछ भी मेरा फार्म था, वो कहाँ पे है? वो गॉड्स के अर्थ पे है, जो भगवान ने दी वाली जो ज़मीन थी उस पर है ना. और उस वक्त हम कहीं पे भी बोलते थे. एट दैट टाइम्स वी नेवर थिंक अबाउट इट दैट्स योर फील्ड, दिस इज माइन फील्ड एज एक्सेट्रा. ओके, इट मीन्स दैट इट वॉज अ थिंग नो मैन कॉल्ड हिज ओन. कोई भी नहीं बोलता था कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, एज एक्सेट्रा. लेबर वॉज द ओनली थिंग मेन कॉल्ड देयर ओन. आई हैव टू मोर क्वेश्चंस. ओके, अभी ये सब कुछ सवाल पूछने के बाद फिर से राजा के पास एक क्वेश्चंस आया. हाउ इट वॉज नियर अबाउट 2 क्वेश्चंस. ओके, 2 क्वेश्चंस थे और मतलब पहले 3 क्वेश्चन पूछ लिए. ही जस्ट ऑलरेडी ही आस्क्ड 3 क्वेश्चंस. अगेन आफ्टर दैट ही हैड 2 क्वेश्चंस. ओके, इट मीन्स दैट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देयर आर 5 क्वेश्चंस. ये ध्यान में रखना है, ठीक है. देन हियर इज आई हैव 2 मोर क्वेश्चंस. हैव टेकन टू डिपेंडिंग on the labor of others. In the old times, men live according to God's law. They have what was their own and did not covet what others had produced. So after that he just asked again one question that कि क्या वो लेबर जो है लेबर एक दूसरे पर डिपेंड रहते थे. हैव टेकन द डिपेंडिंग ऑन द लेबर ऑफ अदर्स इन द ओल्ड टाइम. व्हेन इन द ओल्ड टाइम इट मीन्स दैट ही जस्ट आस्किंग एंशियंट टाइम. वो एंशियंट टाइम के बारे में पूछ रहा था, ठीक है. नाउ दे हैड व्हाट वाज देयर ओन एंड डिड नॉट
covet. Okay, that is meaning. You can see here, means covet means want what others had produced. Okay, अभी वो उनकी जो जीवन शैली थी, वो जीवन शैली कैसी थी? गॉड्स लॉ पर चलती थी, है ना, गॉड्स के लॉ पर चलती थी, या फिर जो कुछ भी उनके थिंग्स थे, जो रिक्वायरमेंट थे, वो कैसे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है, यहाँ पर ये सवाल पूछा गया। इट मीन्स दैट दिस इज योर लेसन, है ना, दिस इज योर लेसन, दैट नेम इज अ ग्रेन एज बिग एज अ hen's egg. Okay, and from this lesson he want to describe, he means for that, for what or for whom. I just use here he. That answer is our writer, that answer is our writer, Leo Tolstoy, है ना. It means that at that times they were very happy. They means what? That old people, okay, they have enough money, they had enough money at that times. If we are just talking about our ancient times, so that time they had enough money as well as if we just thinking about a very ancient time, so that times it wasn't the existence of money, उस वक्त पैसे भी नहीं थे, but also they were happy, but if you just compare that generation and now generations, modern generation, so what will you observe or what you will get differences? Right now we have a lot of burdens, right now we have a very just like frustrations. We have a lot of money, but also we are not satisfied with that money. We have a lot of money, but also we have not satisfied with that money. Okay, so that differences describe our author in this lesson. As well as what is the second thing? Second thing is that in ancient time, they whatever that corn, whatever that grain, it was strong. And right now, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही जस्ट डिस्क्राइब अबाउट दैट when that old person enter at that place, so that times he had used 2 crutches, and when that grandfather entered, so that times he was very strong. That description provided by Leo Tolstoy, ये यहाँ की आपकी स्टोरी थी. Right now we just completed this lesson and I'm sure that you just understood it. ठीक है, till then